Okay, hello, good morning, friends. So, in this video, we will be learning about the ethical principles that the nurse must adhere to, and there are seven such ethical principles, and their names are as justice, beneficence, non-maleficence, accountability, fidelity, autonomy, and veracity. So, one by one, we will be discussing them in brief. So first is justice in fairness. Okay, in this the nurses must be fair when they distribute care. For example, among the patient in the group of patients that they are taking care of, care must be fairly, justly and equitably distributed among a group of patient. ठीक है. So जो justice का मतलब है equally सब patients को एक जैसा treat करना. अगर एक नर्स है, इफ़ शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ 4 पेशेंट्स, सो उसको उन चारों पेशेंट को इक्वली और फेयरली उनको केयर करना है. ठीक है. हाँ, डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ इलनेस उनका केयर डिफ़र कर सकता है, बट दे शुड नॉट फील लाइक कि एक बंदे की तरफ द नर्स इज़ मोर concerned and she is not taking care of others well properly. ठीक है. Then next is beneficence. It is doing good and the right thing for the patient. ठीक है. If whatever the nurse is doing for good for the patient, it is the beneficence principle. Next is non-maleficence. In this, it is meant for doing no harm to the patient as stated in the historical Hippocratic oath. हार्म कैन बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल. ठीक है. कभी कभी हम जान के कुछ गलतियाँ करते हैं, कभी कभी अनजाने में गलतियाँ कर लेते हैं. सो इट इज़ दिस प्रिंसिपल विच हेल्प्स अस नॉट टू डू एनी हार्म टू द पेशेंट. ठीक है. अकाउंटेबिलिटी इज़ एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वंस ओन एक्शन. हर कोई अपने खुद के एक्शन के लिए खुद अकाउंटेबल होता है, खुद रिस्पॉन्सिबल होता है. सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल. Nurses are accountable for their nursing care and other actions. They must accept all of the professional and personal consequences that can occur as the result of their actions. ठीक है. खुद के actions का खुद responsible होना is accountability. Next is fidelity. Fidelity is keeping one's promises. Fidelity मतलब अपना जो promise तुमने किया है, to keep your promise is fidelity. The nurse must be faithful and true to their professional promises and responsibilities by providing high quality safe care in competent manner. ठीक है. So nurse की जब हम अपना oath लेते हैं, so we take a oath of providing better care and a good quality care to the patient, और उसमें safe care भी है. ठीक है. In a more competent manner. ठीक है. Autonomy and patient self-determination are upheld when the nurse accepts the client as unique person who has their innate right to have their own opinions, perspectives, values and beliefs. ठीक है. सो ऑटोनॉमी इज पेशेंट का खुद का राइट है टू टेक हिज और हर ओन डिसीजंस. ठीक है. नर्सेज मस्ट एनकरेज द पेशेंट टू मेक देयर ओन डिसीजन विदाउट एनी जजमेंट और कोएर्शन फ्रॉम द नर्स. The patient has the right to reject or accept all the treatment. Okay. So one of the right of the patient is to accept or reject his own treatment. Okay. So if a patient is saying no to the treatment, then हम उसको ज़बरदस्ती नहीं करते. Yes, we may teach him, we may tell him the consequences of that, but the utmost responsibility of a nurse is to accept what the patient tells them. ठीक है. सो पेशेंट को एक बारी बता देना है इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में. कोई भी चीज़ जो पेशेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बट जो फाइनल डिसीजन होगा दैट विल बी द डिसीजन ऑफ द पेशेंट ओनली. नेक्स्ट इज वेरासिटी. वेरासिटी इज़ बीइंग कम्प्लीटली ट्रूथफुल विद द पेशेंट. वेरासिटी हमेशा ट्रूथफुल होना हमें सिखाता है. नर्सेज मस्ट नॉट विद होल्ड ट्रूथ फ्रॉम द क्लाइंट इवन वेन इट मे लीड द पेशेंट टू डिस्ट्रेस. ठीक है. तो झूठ नहीं बोलना चाहिए. वी शुड बी फेथफुल एंड ट्रूथफुल टू आवर पेशेंट. दिस इज वेरासिटी. तो एक बारी जल्दी से चले जाते हैं. जस्टिस, इक्वालिटी और इक्वली सबको ट्रीट करना. बेनिफिशेंस इज डूइंग गुड. नॉन मेलिफिशेंस इज नॉट डूइंग एनी हार्म. अकाउंटेबिलिटी खुद रिस्पॉन्सिबल होना. फिडिलिटी इज कीपिंग प्रोमिसेस. एंड ऑटोनॉमी रिस्पेक्ट करना any individual as one individual and letting them to take their own decision. Then veracity, it is being completely truthful with your patients. So I hope you all are clear with this
all the seven ethics of the nursing.